Hello, my dear students. Now, this is the third class of respiration. We had started the topic respiration. Respiration, it is a process to release the energy by the oxidation of food or glucose. That is what respiration. Respiration, it occurs in cells where glucose in the presence of oxygen, it converts into CO2 plus H2O. Energy is released in the form of ATP, and this is what the respiration. It is a process to release the energy. That is what respiration. Respiration, it is a multi-step process. This is the multi-step process. That is, it occurs in many steps. रेस्पिरेशन का पहला स्टेप है ब्रीदिंग. सेकंड स्टेप है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. External respiration, it occurs in lungs. थर्ड है internal respiration. और that is also known as tissue respiration. Fourth one, cellular respiration. ये जो रेस्पिरेशन आपको एक्सप्लेन किया गया है, ये एक्चुअली सेलुलर रेस्पिरेशन है. बट ये सेलुलर रेस्पिरेशन तब होगा अगर पहले ब्रीदिंग होगा, देन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, देन इंटरनल रेस्पिरेशन, देन इट इज फॉलोड बाय सेलुलर रेस्पिरेशन. सो दैट्स व्हाई रेस्पिरेशन इज द मल्टी स्टेप प्रोसेस. ब्रीदिंग क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग द fresh air and the releasing of the foul air, that is known as breathing. It is the process of taking the fresh air and releasing the foul air, that is known as breathing. Breathing एक physical change है, and this breathing occurs in two steps. That is what inspiration, or that is also known as inhalation, and expiration, or that is also known as exhalation. Exhalation. Now, what is inspiration? The taking of fresh air, that is known as inspiration. The removal of the foul air, that is what? Expiration. Inspiration, this is expiration. We'll discuss now the mechanism of breathing. मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है, ये अपने आप में एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है
एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब बेटा आपको मैकेनिज्म समझने से पहले कुछ टर्म्स है, जैसे इसे कहेंगे थोरेसिस कैविटी, दिस इज थोरेसिस कैविटी, दिस इज अब्डोमेन। अब्डोमेन एंड थोरेसिस कैविटी का जो ये पार्टीशन है, दिस इज नॉन एज डायफ्रागम। नाउ यू सी द चेंजेस कि जब इंस्पिरेशन होगा तब क्या होगा। दिस इज इंस्पिरेशन, thoracic cavity enlarges, diaphragm flattens, अंदर लंग्स है, दे गेट द मोर स्पेस, लंग्स एक्सपेंड करेंगे, अंदर एयर का प्रेशर कम हो जाएगा, बाहर एयर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, एंड एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लो प्रेशर, सो द एयर रशेस in, and this is what inspiration, this is how the inspiration occurs, this is inspiration. Now see expiration, expiration क्या है, this is expiration, thoracic cavity decreases, diaphragm पहले फ्लैट था, now it is curved, curved हो जाएगा, अंदर लंग्स को स्पेस कम मिलेगा, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, बाहर एयर का प्रेशर कम है, अंदर एयर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, सो एयर रशेस आउट, एयर कम्स आउट, एंड दिस इज नॉन एज एक्सपीरेशन. So this is what the mechanism of breathing. It occurs in two phases, the inspiration and expiration. Then this breathing, it is followed by external respiration, and external respiration, it occurs in the lungs. What happens in the lungs? In the lungs we have alveoli. By the inspiration, the fresh air goes and fills in alveoli. It has the more percentage of oxygen, and there in the lungs there are blood capillaries. Blood capillaries के अंदर deoxygenated blood आएगा from body via heart, जिसके अंदर CO2 का लेवल ज़्यादा होगा क्या बेटा? The CO2 moves from blood capillaries to alveoli, and oxygen moves from alveoli to blood capillaries. This exchange of O2 and CO2 between alveoli and blood capillaries is known as external respiration. From alveoli, oxygen will move to the blood capillaries. In the alveoli we have fresh air. Fresh air के अंदर we have more quantity of oxygen, more percentage of oxygen. That oxygen will move to the blood capillaries, and from the blood capillaries the CO2 will come in the alveoli, and in the alveoli now it become a foul air, and foul air it is removed by the process of expiration. So this is how the external respiration occurs. External respiration, it is actually the site of oxygenation of the blood. It is the site of oxygenation of the blood. Oxygenation of blood. हम ये कहें where oxygenation of the blood occurs? The oxygenation of the blood occurs in the lungs, and the process by which the oxygenation of the blood occurs, it is by external respiration. So by the external respiration, the blood become oxygenated, and the oxygenated blood from the lungs, it comes in the heart, and heart pumps the blood throughout the complete body in blood capillaries, and there will be the internal respiration, and that is also known as tissue respiration. So in the body we have
blood capillaries. In the body we have blood capillaries, और साथ के साथ blood capillaries के साथ में है ये है cells और you can say tissue. उन cells and tissues के अंदर चल रहा है ये रेस्पिरेशन चल रहा है, CO2 रिलीज हो रहा है, तो सेल्स के अंदर CO2 बन रहा है बाय द रेस्पिरेशन, और ब्लड कैपिलरीज के अंदर होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे, अभी बताया कि बाय द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इन द लंग्स द ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड अकर्स, and the oxygenated blood from the lungs it comes in the heart, then it goes to the body in the blood capillaries. blood capillaries के साथ में simultaneously बिछे हुए हैं cells जिसे कहेंगे टिश्यू. सेल्स के अंदर चलता रहता है, ये रेस्पिरेशन चल रहा है, CO2 रिलीज हो रहा है, तो CO2 is continuously produced in tissue or the cells, and in the blood capillaries we have oxygen. By the process of diffusion, the oxygen moves from blood capillaries to cells or the tissues, and CO2 moves from cells or tissues to the blood capillaries. This exchange of O2 and CO2 between blood capillaries and tissue is known as internal respiration, or this is known as tissue respiration. CO2 from the tissues it comes in blood capillaries. From the blood capillaries, CO2, the blood will become deoxygenated. The deoxygenated blood is taken to the heart, then it is sent to the lungs, then it is removed from the body by expiration. Okay, now oxygen will move from blood capillaries to cells or the tissues, and it start cellular respiration. How the cellular respiration occurs? First, the glucose converts into pyruvate. Pyruvate is the 3-carbon compound. The conversion of glucose into pyruvate is known as glycolysis. It occurs in cytoplasm. Although oxygen is available, लेकिन जो glycolysis process है, it does not makes the use of oxygen. ये oxygen का use नहीं करेगा. Then whatever the pyruvate is formed, this pyruvate enters into mitochondria. This pyruvate enters into mitochondria. This pyruvate enters into mitochondria, and in mitochondria pyruvate by using oxygen it converts into CO2 plus H2O plus, energy is released in the form of ATP. This conversion of pyruvate into CO2 and H2O and the release of energy, this is known as Krebs cycle. This is known as Krebs cycle. So this is how the respiration occurs. Cellular respiration, it occurs in 2 phases. That is what glycolysis and Krebs cycle. Glycolysis, it occurs in cytoplasm. Krebs cycle, it occurs in mitochondria. Glycolysis makes the use of oxygen, does not make the use of oxygen, and Krebs cycle makes the use of oxygen. So the conversion of glucose into pyruvate, the 3-carbon compound in cytoplasm without making the use of oxygen is known as glycolysis, and the conversion of pyruvate
into CO2 H2O with the release of energy in the mitochondria by making the use of oxygen is known as Krebs cycle. हम ये कहें सेलुलर एस्पिरेशन अकर्स इन टू फेजेस, ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल. ग्लाइकोलिसिस अनएरोबिक फेज है, क्रेब्स साइकिल उसका एरोबिक फेज है, एंड दिस इज हाउ और सेलुलर रेस्पिरेशन कंप्लीट्स. दिस इज द रेस्पिरेशन. ये फाइनली यहाँ खत्म होता है, स्टार्ट ब्रीदिंग से होता है. इसीलिए रेस्पिरेशन को बोला गया है इट इज द मल्टी स्टेप प्रोसेस. सो दिस इज व्हाट रेस्पिरेशन. अब यहां पर एक छोटी सी डिस्कशन है कि कई बार आप देखते हैं कि एक एथलीट है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज करता है और मसल कहीं पे खिंच जाती है और बोलते दैट इज मसल क्रैम्प और ऑक्सीजन डेप्थ और मसल फैटिग. उसको कहेंगे मसल क्रैम्प और मसल फैटिग और ऑक्सीजन डेप्थ. एक्चुअली ये होता क्यों है? इफ ए पर्सन इज डूइंग हार्ड फिजिकल एक्सरसाइज द फेलो नीड मोर एनर्जी. उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए. ओके, ज्यादा एनर्जी लेने के लिए ठीक है डाइट ज्यादा ले लेगा, और जब ज्यादा एक्सरसाइज करेगा, when the fellow is doing hard physical exercise, okay, the glucose will convert into pyruvate that is known as glycolysis. यहां पर ऑक्सीजन की नीड आवश्यकता नहीं है, लेकिन बंदे का ऑक्सीजन डिमांड तो ज्यादा है और ब्लड उतनी ऑक्सीजन आगे सप्लाई ना कर पाए, because blood has the limited capacity to supply oxygen to the body or the cells. If the fellow is doing hard physical exercise, the glucose will convert into pyruvate. उस समय ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा. पर्सन का, बंदे का ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है और ब्लड है उतनी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पा रहा है. इन दैट केस, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ द ऑक्सीजन, दिस पायरुवेट कन्वर्ट्स इनटू लैक्टिक एसिड. This converts into lactic acid and this is known as oxygen depth. ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी के कारण ऐसा हुआ. This is also known as muscle fatigue. मसल थक जाएगी क्योंकि एनर्जी रिलीज नहीं होगी. एनर्जी रिलीज कब होगी? अगर क्रेब्स साइकिल हो, बट क्रेब्स साइकिल यहाँ पे क्या हो गया? ब्लॉक हो गया है. दिस इज ऑल्सो नोन एज मसल क्रैम्प. हम ये कहें इट इज द फेज ऑफ लोकलाइज्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में एक पर्टिकुलर पार्ट में, एक लोकलाइज्ड पार्ट में एक एनारोबिक फेज है, उसकी एक स्टेज है, दैट इज नोन एज मसल क्रैम्प or muscle fatigue or oxygen depth. So this is all about our second life process, that is what respiration. Thank you.